बेंड होगी नॉर्मल की तरह। नॉर्मल बेंड होगी टुवर्ड नॉर्मल की या टुवर्ड नॉर्मल। मतलब आपको कुछ में शक था? हेलो। लाइव में टेक्स्ट की बात है, इसको मारो मुझे मारो इसके लिए नहीं निकल कंफर्म करिए अपना अच्छे कि मैं कह रही थी इसीलिए तो स्पीड तो हाई में जाएगी और कम हो जाएगी तो बात बिल्कुल ठीक है। ये याद है तो जब ये एमपी जब पढ़ते तब से यार एक्चुअली इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला ही होता है ना सर c अपॉन v या p अपॉन c कुछ ऐसे करके c अपॉन v होता है। हां क्योंकि कभी तो हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में नॉर्मल के नजदीक जाती है और लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से नॉर्मल से दूर जाती है। क्या मैं कह रहा हूं हायर पे जाने पे क्या होता है नॉर्मल के क्लोजर होती है। एक तो बोलना था एंगल ऑफ इंसिडेंस समीकरण मार देंगे हमने उल्टा बोला था। अच्छा हम क्लास ले लेते हैं मेरा वाला भी ले सकते हैं मैंने ऑप्टिकल एक सेमेस्टर पढ़ाया है स्लाइड भी बता यहां से वो लेके फिर हम आपके देखिए यहां से स्टार्ट होता है दृश्य के पहला लेक्चर था गोल टू मीटर एंड जो कि बेसिक इसमें सबसे पहले की जाती है बेसिक को उसके बाद जो रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको यूज करना तो पहले जैसे मान लीजिए ये तो इसको यूज करने में जिसके लिए कई यहाँ पे दिखा रहा है वेरिएबल गैस इसके रेस्पेक्ट में इसको बैलेंस करेंगे कैलकुलेटर क्या देगा अब क्या है p विकार u विकार r विकार या विकार एक हेलो। हेलो। हेलो am I audible? हेलो। दिख रही है आप लोगों को शेयर किया है तो I have shared the cute sheet is visible.
T, it includes variable register. Yes. Okay. Is supplying here. Am I audible to all of you? Hello. Okay, so I think I am audible to all of you. So let's start the session. So yeah, I think that this tube 4 is visible to all of you. I have shared the tube 4 to all of you. So it is visible. The tube third have been covered previous session. So is it visible? Hello? Akanksha Rathod. Mohit Kumar. Are you there? Hello? Yes. Okay, okay. So this total tutorial 4 is covered by the unit 4 material, that is network layer exactly. इसमें हम लोगों ने जो भी क्वेश्चंस वगैरह अभी स्टार्ट किए हैं उसमें आपको सारे स्टार्टिंग के पेज मिल जाएंगे, फिर बाद में जैसे जैसे यूनिट विल कवर एंड द क्वेश्चंस विल आल्सो कवर. तो जैसे स्टार्ट करते हैं हम लोग एक एक में. What is the difference between a direct and indirect delivery? This is the first question. So इसके बाद देखिए इसमें explain the types of data delivery for different layers using suitable diagram. This is another question. How we perform the data delivery for different layers. तो इसके लिए हमको एक डायग्राम बनाना होगा और उसको अलग अलग लेयर्स के लिए हमको इसको डिस्कस करना है कि कैसे हमारी डेटा डिलीवरी डिफरेंट लेयर्स में पॉसिबल होती है. Then the next one is why routing is important in a computer network. Why routing is important in a computer network. This is the next question. Then the fourth one is explain fixed or static routing algorithm with examples. Question 5 is what is flooding? Why flooding technique is not commonly used for routing? Okay. So the sixth one is what is congestion? Explain the effect of congestions in network layer. And what are the causes of congestion? Explain different congestion control techniques. So these are the questions which will be covered in your tutorial 4. Clear? As all in the previous 2 lectures, we have discussed about the routing mechanism of the packets in network layer protocol. Clear? How the packets get transferred or datagram get transferred through different in between routers. Clear? So as you see, what the first question is. So start with the first question. You can also see there are some supplementary questions are there, then short answer type questions are there, and crossword puzzle is there. So I have shared this to all of you. I think you all can access this. All have got this, no? All have got this. So now the first question is what is the difference between a direct and indirect delivery? Clear? So this was the first question. Can anyone explain what is direct and indirect delivery in packet transfer or datagram transfer?
Can anyone explain? Can anyone explain? Are you getting my voice? Hello. Okay. So nobody is responding. I think none of you are aware with the particular question. So I am just telling you the answer. In a direct delivery, exactly what is going to happen? The final जो destination होता है, जहाँ पे पैकेट रिसीव होता है, the final destination of the packet is a host connected to the same physical network as the deliver. मतलब जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है पैकेट का, वो एज ए होस्ट की तरह काम करता है, जो कि सेम फिजिकल नेटवर्क में कनेक्टेड होता है, जहाँ पे डिलीवर, जहाँ से वो पैकेट आ रहा होता है वहीं पे वो भी कनेक्टेड होता है. दिस इज अ डायरेक्ट डिलीवरी. और इनडायरेक्ट डिलीवरी क्या होती है कि जो पैकेट है राउटर टू राउटर से के मतलब इट इज गोज फ्रॉम वन राउटर टू अनदर राउटर और until it reaches the one connected to the same physical network. क्लियर? जब तक ये उस नेटवर्क पे नहीं पहुंच जाता जहां वो सेम फिजिकल नेटवर्क से कनेक्टेड था एज इट्स फाइनल डेस्टिनेशन. So it is a type of indirect delivery. Clear? Now the next one is, so this is the difference between basic difference between direct and indirect delivery in the network layer protocol of the packet transmission or datagram transmission. Clear? So now the next one is, मतलब कहने का ये है कि एक तरह से समझ लीजिए कि जो डायरेक्ट डिलीवरी होती है उसमें पैकेट की, उसमें हमारा जो होस्ट है और जो हमारा सेंडर है, मतलब सॉरी, जो हमारा सेंडर है और जो रिसीवर है, जो उसमें पैकेट की डिलीवरी हो रही है, इस तरह से दोनों सिंक्रोनाइज होने चाहिए और सेम फिजिकल नेटवर्क में होने चाहिए. ठीक है? और इनडायरेक्ट डिलीवरी में क्या होता है कि इनडायरेक्ट में जो नेटवर्क जो डायरेक्ट रूट होता है वो ना होके इनडायरेक्टली इसको रूट मिलता है, जो कि राउटर टू राउटर हमारा वेरी करता है. ठीक है? which is going from one router to another router. Okay, so the second question is, explain the types of data delivery for different layers using suitable diagram. What kind of data delivery is possible? इसका मैं आपको अभी एक डायग्राम है, मैं आपको भी शो करूंगा. तो ये भी हम लोग देखते हैं ये वाला क्वेश्चन. नाउ वी कम टू थर्ड वन इनिशियली, देन I will discuss this question number 2. Okay. So question number 3 is, why routing is important in computer network. This I have already discussed. You can anyone explain why routing is important in computer network? This is very simple question. Can anyone explain? राउटिंग बेसिकली क्या करता है, ये एक हमारा एक नेटवर्क एस्टेब्लिश करता है एग्जैक्टली, या एक इंटर नेटवर्किंग एस्टेब्लिशमेंट के लिए होता है, जो कि एक एड्रेसिंग स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करता है दैट यूनिकली डिफाइंस ईच डिवाइस. ठीक है? एंड ऑर्गेनाइजेज इंडिविजुअल डिवाइसेस इनटू ए हायरार्किकल नेटवर्क स्ट्रक्चर. एग्जैक्टली क्या है कि जैसे हमारे पास अगर हमें कोई राउटिंग का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए जो हमें पैकेट ट्रांसफर करना है
उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए हमें राउटर्स की जरूरत पड़ती है या स्विचेस की जरूरत पड़ती है, लैन स्विचेस की, जिसकी वजह से वो वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ट्रेवल कर सकता है। तो अगर हमारे पास ये अवेलेबिलिटी, अगर हमको पार्ट डिफाइंड नहीं होंगे तो, या कैसे कैसे नेटवर्क हमारा किस किस तरह से ट्रेवल करेगा, उसको हम अगर सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, ये सारी चीज़ें नहीं देंगे तो हाउ द पैकेट विल गेट रूट, या पैकेट हमारा कैसे ट्रेवल कर पाएगा। ठीक है, तो उसको हमें प्रॉपर गाइडलाइन मीन्स प्रॉपर इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, जैसे सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस। तो ये दोनों एड्रेस हम हेडर में इंक्लूड करते हैं किसी भी पैकेट या डेटाग्राम के। तो राउटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी नेटवर्क हायरार्की में, कि जैसे हमारा पैकेट वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट जब कम्युनिकेशन करता है तो उसको सबसे पहले उसको एक पाथ चाहिए होता है, पाथ नहीं सॉरी, पहले उसको एक एड्रेस चाहिए होता है जो कि सोर्स एड्रेस एंड डेस्टिनेशन एड्रेस है, कि कहाँ से वो ओरिजिनेट हो रहा है और कहाँ जाएगा। उसके बाद उसको पाथ चाहिए होता है नेटवर्क में, नेटवर्क के बीच में उसको एक इन बिटवीन ए नेटवर्क इट रिक्वायर्स ए पाथ, ठीक है, जिससे वो सिक्योरली ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन कर सके पैकेट बाय पैकेट, ठीक है, अक्रॉस द पाथ टुवर्ड्स एन इंटेंडेड डेस्टिनेशन। इससे क्या होता है हमारा, इसमें कई सारी एल्गोरिथम भी हम लोग यूज करते हैं जिसको राउटिंग प्रोटोकॉल्स एंड एल्गोरिथम बोलते हैं। These algorithms are exactly designed to plot routes using such criteria as throughput, delay, simplicity, low overhead, reliability and flexibility। ठीक है, इसी के लिए हम लोग एक राउटिंग टेबल भी यूज करते हैं जो डिसाइड करता है कि किस किस पाथ को फॉलो करेगा। तो वी असाइन सम numbers to each of the packet or datagram। क्लियर, ये हमने आज लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि उसको हम लोग एक जितने भी राउटिंग स्टेशन से वो पास होते जाएगा इन बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर, वो सब उसको एक नंबर असाइन करते हैं। ठीक है, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, ठीक है, तो उसको एक नंबर असाइन किया जाता है। उसके बाद जो है उसका रूट डिसाइड होता है कि ये इस रूट से होके जाएगा। ठीक है, this will be the host address and this will be the destination address। तो ये सारी चीजें हम लोग उसमें डिसाइड होता है, उसके बाद वो मूव करता है। अदरवाइज अगर उसको हम रैंडमली मूव कराएंगे तो देयर विल बी द चांस ऑफ डेटा लॉस एंड mishappening with the data as well as the duplicacy of data due to some error control mechanism। clear, so इसमें हमारा जो डेस्टिनेशन है उसको हमारा पैकेट प्रॉपर रिसीव नहीं होगा। तो राउटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द कंप्यूटर नेटवर्क। तो इसके बाद एक क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन फिक्स्ड और स्टैटिक राउटिंग एल्गोरिथम विद एग्जांपल। तो ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, स्टैटिक और फिक्स राउटिंग एल्गोरिथम क्या है। तो ये अभी हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, सो वी विल कवर इन द लेक्चर, देन it will automatically covered in the tutorial also। So now the question number 5 is what is flooding? Can anyone explain what is flooding? Flooding I have already discussed. Can anyone explain what is flooding? Hello? Akansha Rathod is there? Akansha Rathod is there? I think nobody is responding. Hello? Am I audible to all of you? No response is from your side. So can anybody respond? So exactly ये भी ध्यान रखिएगा, जो राउटिंग है that is special
डिवाइस है जो कि राउटर होता है, उसके द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है। राउटिंग एक मैकेनिज्म, तो इट वर्क्स एट द नेटवर्क लेयर इन द OSI मॉडल एंड इंटरनेट लेयर इन द TCP/IP मॉडल। तो जो राउटर है वो आपका नेटवर्क लेयर में वर्क करता है OSI मॉडल में, और TCP/IP इंटर नेटवर्किंग में वर्क करता है दैट इज TCP/IP मॉडल। उसमें इंटर नेटवर्किंग मतलब इंटरनेट लेयर पे वर्क करता है। ठीक है, ये एग्जैक्टली पैकेट्स को फॉरवर्ड करता है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द पैकेट हेडर एंड फॉरवर्डिंग टेबल। क्लियर? The routing algorithms are used for routing the packets. The routing algorithm is nothing but a software responsible for deciding that optimal path through which packets can be transmitted. Clear? Thus, in the case of Buddhist boundaries, where R equal to S to the power 2, the packet So some major criteria should also be noticed when the packet gets routes from one place to another place, that is bandwidth, delay, current load on the path, etc. Because if the congestion occur during the transmission, it means the bandwidth allocation gets what much heavier. Clear? So in that case, the network gets overloaded and the information gets lost due to the uh, what deduction of the packets in the form of what losing of packets. Clear? So in that particular case, the destination will not receive complete datagram or packets, so the data get lost and the information will not arrived as it is sent by the sender, clear, on the destination site. So to avoid these problems, so we need to get a flexible system through which the packet get transferred easily without the loss or collision. Clear? So optimal path of the destination is very important. So optimal path आपको चाहिए destination तक, जिससे कि पैकेट हमारा इजीली ट्रांसफर हो जाए विदाउट एनी प्रॉब्लम। Some shortest path algorithm is also used to detect the shortest path to the destination. Where if we have long path, if we have short path, so the system will follow the shortest path because it will take less time as well as less time consuming, and as well as the system will be less corrupted by the other network as well as other packets or data. So shortest paths will also be preferred. Now the next question is, what is flooding? Can anyone explain what is flooding? Dipanshu Srivastava. Dipanshu Srivastava is there. What is flooding? Hello. Nobody is responding. Are you getting my voice? Hello. Hello. All of you are getting my voice. Nobody is responding. Hello. यस सर। Who is one? कौन है? किससे सर बात वो हो रही है? अच्छा। Several times I have सर वो आपकी asked आवाज सर बीच someone. में कर रही थी, अच्छा। बैकग्राउंड So डिस्टर्बेंस। okay. Now is it clear now? हाँ सर अब थोड़ी सही है। Okay. The question I have asked, what is flooding? Flooding. Have you heard about flooding in the network layer protocol for routing algorithm? ये सर राउटिंग एल्गोरिदम होती है। राउटिंग, जब हम पैकेट की राउटिंग करते हैं तो उसमें फ्लडिंग क्यों नहीं यूज करते हैं? राउटिंग, अभी मैंने आपको बताया कि राउटिंग क्या होता है। राउटिंग इज ए packet or datagram transmission from the source end to the destination end.
ये राउटर्स होते हैं बीच बीच में लगे होते हैं। हमने क्लास में भी आपसे डिस्कस किया था कि we use the routers in between the source and destinations और LAN switches are there, clear, जिससे हमारा वो पैकेट सोर्स एंड से डेस्टिनेशन तक ट्रांसमिट होता है राउटर्स के थ्रू होते हुए। ठीक है, ये यस सर। राउटर्स आपके 5, 6, 7 या जैसी रिक्वायरमेंट हो वैसे हम राउटर्स यूज करते हैं। ठीक है, इससे हम दो तरह के नेटवर्क बनाते हैं, कनेक्शन लेस नेटवर्क, एक हमारा कनेक्शन लेस नेटवर्क होता है जिसमें हम कोई कनेक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, तो एयर के थ्रू हमारा पैकेट ट्रांसमिट होता है सोर्स से डेस्टिनेशन तक। ठीक है, एक होता है हमारा कनेक्शन बेस्ड सर्विस, मतलब उसमें कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस में क्या होता है, कनेक्शंस होते हैं, हर राउटर्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, दिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ड्यूरिंग द क्लास लेक्चर, सो I think if you were involved in that particular lecture, so you will be aware with that, which I have discussed already. So यस सर। मेरा कहने का मतलब है कि हमने उसमें कुछ प्रॉब्लम्स बताई थी सिस्टम में, जो कि राउटिंग मैकेनिज्म में पैकेट की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे एक टॉपिक, एक टर्म है फ्लडिंग। फ्लडिंग यू ऑल आर अवेयर, आई थिंक। फ्लडिंग का मतलब समझ रहे हैं आप? हैव यू डिस्कस विद द फ्लडिंग? I'm just sharing, just wait. The topic flooding. Just wait. I'm sharing. ये दिख रहा है सभी को? Is it visible? Is it यस visible? मैंने एक फाइल शेयर करी है, यस सभी को दिख रही हो। तो इसमें देखिए एक टर्म है फ्लडिंग। अभी हम राउटिंग आप लोगों से डिस्कस किया था। देखिए, दिस वाज द राउटिंग, दिस इज द राउटिंग, हाउ द पैकेट्स गेट रूट। डायग्राम आपको दिख रहा होगा, हाउ द पैकेट्स गेट रूट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। क्लियर? So several routers are used, means R1, R2, R3, R4, ये सब राउटर्स हैं। कुछ LAN स्विचेस यूज हो रही हैं, ये WAN स्विचेस देख सकते हैं, वायरलेस एरिया नेटवर्क बनाने के लिए। ठीक है, तो ये सब हमारे पैकेट या डेटाग्राम को एक्सेस करने के लिए यूज हो रहे हैं। ठीक, राउटर्स आपके दिख ही रहे होंगे, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7। ठीक, कुछ LAN स्विचेस हैं। इसके बाद हमने आपको पैकेटाइजिंग बताया था कि इसमें क्या होता है कि हमारा जो है अपर लेयर से पहले नेटवर्क लेयर में डेटा आता है, फिर उसको एनकैप्सुलेट करते हैं और फिर उसको हम ट्रांसफर करते हैं। देखिए, ये रूटिंग एंड फॉरवर्डिंग है, ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। नाउ वी कम टू व्हाट फ्लडिंग। में आपको बता देता हूँ, दिस इज द पोर्शन ऑफ फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल इज एग्जैक्टली द पार्ट ऑफ फ्लडिंग। Clear? If you not control the flow of data or packets from the source end, then it will create some kind of what, overflow of data into the network. In between the source and destination, the overflow of the net packets or datagram will happen uh, at each router. So it will be very much a dangerous situation. So in that particular case, when the routers will not be able to manage the datagram or packet, so it will just discard the excess of the packets or datagram। तो ये क्या करेगा, उसको मतलब उसको लूज करेगा। ठीक है, तो एरर रिकवरी mechanism will also work in that particular case, so it will produce the duplicacy of the packet। क्लियर? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आपको दिखा देता हूँ उसमें। Flooding is a very much dangerous situation। Clear? Flooding is very much dangerous situation। जब too many packets or datagrams are there available here, so it also created the congestion into the network। So ये हम लोगों ने आज डिस्कस किया था पैकेट स्विचिंग।
सो इसमें हम लोगों ने वर्चुअल सर्किट पैकेट स्विच नेटवर्क पढ़ा था एंड डेटाग्राम बेस कनेक्शन लेस सर्विस पढ़ा था। फिर हम लोगों ने ये सारी चीजें डिस्कस करी थी। मैं आपसे फ्लडिंग की बात कर रहा था, तो आई एम जस्ट शोइंग यू द फ्लडिंग पोर्शन। Flooding is exactly a type of congestions created into the network. Means if we are getting access of the data into the data or packet into the each router's node between the network, clear? So it means the source end is just creating too much packets or transferring too much packet to the network, clear? It is not dealing with that कि how much routers are getting burdened, clear? उसमें इससे मतलब नहीं है कि राउटर पे कितना बर्डन आ रहा है, बस वो पैकेट्स को आ रहा है, ट्रांसफर कर रहा, आ रहा है, ट्रांसफर कर रहा है नेटवर्क में। तो नेटवर्क जैसे ही ओवर बर्डन होगा, so it will just try to demolish the packets which are excess in amount, clear? उसको nest कर देगा, मतलब it will drop the packet, clear, which are in excess form and inform the source that we are getting overloaded. So the network is getting overloaded and immediately inform the source end that the network is getting overloaded. So kindly stop the excess transmission of the packet into the network, or just try to uh, slow down the speed of the packet transmission into the network as soon as possible. Otherwise, the transmission will be what corrupted. Clear? So, or the transmission will be not fruitful. Clear? आई थिंक मेरी बात समझ में आ रही होगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ। हेलो, Yes, sir. whatever I have explained, is it understood to all of you? जो भी समझाया मैंने, कुछ समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, सो दिस इज द फ्लडिंग। फ्लडिंग इसीलिए हम लोग राउटिंग में यूज नहीं करते हैं, क्योंकि जो राउटिंग होता है, राउटिंग एल्गोरिथम में जो भी राउटिंग मैकेनिज्म है जिसमें पैकेट हमारे इजीली राउट्स करते हैं, उसमें फ्लडिंग जो होती है दैट इज वेरी मच एक्सेस ऑफ द पैकेट्स आर देयर, क्लियर? फ्लड का मतलब भी आप लोग समझते होंगे, जैसे बाढ़ आ जाना, ठीक है? तो वो वाली सिचुएशन यहाँ पे अराइज हो जाएगी अगर एक्सेस ऑफ पैकेट आ जाएंगे, तो द राउटर्स will not be able to manage this particular excess of packet. उसकी कैपेसिटी जितनी होगी, अगर उससे ज्यादा उसको पैकेट मिलेंगे तो इट विल ड्रॉप द एक्सेस अमाउंट ऑफ पैकेट। Now congestion control and internet banking, TCP/IP. Now the next question is, what is congestion? Congestion क्या होता है? Explain the effect of congestions in the network layer. Do anyone explain what is congestion? Anyone explain to what is congestion? कंजेशन क्या है? कंजेशन वही है, फ्लडिंग का ही पार्ट है। अगर मान लीजिए एक्सेसिव नेटवर्क जो है हमारे पास, वो डेटा आएगा तो इट विल क्रिएट सम काइंड ऑफ कंजेशन, क्लियर, इनटू द नेटवर्क। इज इट क्लियर? So if we got the excessive data from the source end, then the congestion will create. It means mm, the network gets overloaded and the packets will what uh, collide with the another packet as it is not serviced. Clear? As soon as possible, अगर इनको सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है नेटवर्क या राउटर, so they will collide by themselves and it will create what? A kind of congestion into the network. Clear? Due to overloading or flooding of the network. Clear? So इसके लिए हमारे पास कुछ different congestion control techniques हैं. So we will discuss it later on, how we can avoid the congestions. Clear?
क्योंकि जब भी कंजेशन होगा so error message will be generated and it will be transferred to the सोर्स एंड. अगर सोर्स एंड पे हम ट्रांसफर करेंगे उस एरर मैसेज को, जब जाएगा तो सोर्स को पता चलेगा कि हमारे नेटवर्क में कहीं ना कहीं ये पैकेट का दूसरे पैकेट से कंजेशन हो रहा है. कंजेशन होगा तो मतलब पैकेट लॉस हो रहा है, तो ये सोर्स को पता चलेगा, तभी वो रीट्रांसमिशन करेगा, नहीं तो रीट्रांसमिशन नहीं कर पाएगा सेम पैकेट का. ठीक है. So it is very much important to avoid the congestion. So the sender or the host got the an address that is called error control message, which will just controls the delivery of the packets from the source end to avoid the congestions and also for retransmission of the lost packet. Clear? Now the next question is what are the cause of congestion? Congestion के कारण क्या है? Explain different congestion control techniques. तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे. कंजेशन का कारण मैंने बता ही दिया, that is something like the excess of the packets coming into the system and some other congestion regions are there. Then the next one is explain leaky bucket algorithm and token bucket algorithm. ये हमारे दो मेन एल्गोरिथम है जो यूज होते हैं कंजेशन कंट्रोल के लिए. लीकी बकेट एल्गोरिथम और टोकन बकेट एल्गोरिथम. दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. ठीक है. ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जब बढ़ाएंगे तो डिस्कस करेंगे कंजेशन कंट्रोल टेक्निक्स. देन द इंटरनेटवर्किंग विद सुटेबल डायग्राम. Explain internetworking with suitable diagram. Means what is internetworking? Internetworking is what basically TCP IP. Clear? That is transfer control protocol and internet protocol. Then the next question is IP packet, IPv4, IPv6. Means internet protocol version 4, internet protocol version 6. Yeah. इसमें भी हम लोगों को काफी चीजें डिस्कस करनी है कि IPv4 से रिलेटेड है, देन IPv6 से रिलेटेड, then the transport layer protocol, UDP, universal datagram protocol, and transfer control protocol, then ATM, asynchronous transmission mode. Clear? तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे. इसके बाद आपके कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं later on, and then there is a crossword puzzle. Anyone have any doubt till now? अभी तक जितना हमने डिस्कस किया. मोहित कुमार, have you any doubt regarding any question on control flooding? No, sir. Anyone else? Anyone else have any problem? So it is very much, I think you should all know that this is very much important topic, that in the 7-layer structure of the OSI model. Clear? This particular network layer is very much important because it totally defines the routing of the packets, means how the packets get transferred from one end to another end. It just takes the packets from the transport layer and supply to the lower one levels. Clear? So ये चीज ध्यान रखना है. सोर्स एंड पे हमारा क्या होता है? So you just take the so I'm just sharing you. एक मिनट आप वेट करिएगा जरा.
इज इट क्लियर? ये दिख रहा है सभी को? अभी नहीं दिख रहा होगा, एक मिनट। नहीं दिख रहा है। ये दिख रहा है सभी को? You हाँ have सर, अब got दिख the रहा है। question like congestion control, na? This is the what congestion control. You all can see here. This is the congestion control. This is a very much issue in the network protocol. अगर आपसे कोई पूछता है what is the role of congestion control in the network layer, so this is the answer for that. It is a network layer protocol, clear, in which the congestion is happening. So it is a situation in which too many datagrams are present in the area of the internet. मीन्स एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे पैकेट्स हमारे रिसीव हो गए। आप लोगों ने जैसे देखा होगा जब पीक टाइम होता है दिन में, तो अगर आप कई सारे कॉल्स आप कनेक्ट करते हैं एक साथ एक ही नेटवर्क पे, तो उसमें क्या होता है कि कॉल बिजी बताता है, मतलब कॉल आपकी कनेक्ट नहीं होती है। ठीक है, so that is the problem of what congestion means. Too much traffic are there in a particular time instant, and so much call are initiated in that duration. Clear? So to avoid these problems, so we need some congestion control techniques. ठीक, अगर उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा उसको पैकेट्स मिल जाएंगे नेटवर्क की कैपेसिटी से, तो वो नेटवर्क हमारा क्या हो जाएगा, ओवरलोडेड हो जाएगा। तो राउटर्स हमारे क्या करेंगे, फिर पैकेट फुल यूज करेंगे। ठीक है, में ड्रॉप्स द डाटाग्राम और पैकेट्स। अगर ज़्यादा डेटाग्राम ड्रॉप हो गए तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब हमारे पास डुप्लीकेट पैकेट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे ड्यू टू एरर कंट्रोल मैकेनिज्म एट द अपर लेयर। क्लियर? तो अगर ये कंजेशन कंटिन्यू रहता है तो एक सिचुएशन ऐसी पहुंचेगी कि सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा और कोई भी डेटा डिलीवर नहीं होगा।